Hello, dear students. Welcome to my channel Teaching IQ. Today we discuss the most important chapter, that is Piaget's theory of cognitive developments is associated with the child psychology. Piaget theory जो कथा हम डिस्कशन कर कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड जो थ्योरी मिनिमम आम जेकोसी टीचिंग एग्जाम दौचु मान 2 ରୁ 3ଟି क्वेश्चन पाई परछु तो मु जो क्वेश्चन शेष रखी एवं जो नोटा प्रिपेरेसन करी से नोटा जो मैंने बीएड एपियरिंग कर बीएड परीक्षा देवे से नोटा लिखिपारे से नोटा को पढ़ले आम समस्त प्रकार क्वेश्चन देवाई एलिजिबल हो। सो चलते देखा पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट द पॉइंट व्हाट इज कॉग्निशन, व्हाट इज दैट पॉइंट इज कॉग्निशन कॉग्निटिव दैट्स द कॉग्निशन। कॉग्निशन कौन कहले कौन बुझा। कॉग्निशन इज द एक्टिविटी knowing the process through which knowledge is acquired। जो थे आम नॉलेज एक्वायर करुचे मैं लिखुच कॉग्निशन कौन। कॉग्निशन इट इज द एक्टिविटी, it is the activity and the process through which knowledge is acquired। knowledge is acquired। कॉग्निशन that is it is a process activity that the process through which the knowledge हम जो knowledge टा गेन करूचे बा knowledge टा एक्वायर करूचे थ्रू कॉग्निशन। कॉग्निशन टा कहाँ से रिलेटेड अच्छी जो कॉग्निटिव टा पढ़ुचे से कहाँ से रिलेटेड अच्छी। कॉग्निशन रिलेटेड टू मेमोरी, थिंकिंग रीजनिंग, that is reasoning and also problem solving। That's related to our brain, that is related to our brain। then कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ से बेसी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आम जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ुचे से इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है। दैट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इटा आम फास्ट लिखिपर है तो फास्ट इंट्रोडक्शन कौन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज स्ट्रांगली influenced by physiological change of brain and environmental experiences। दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। से कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बौद्धिकता आम डेवलपमेंट घटुची से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस फिजियोलॉजिकल चेंजेस आवर ब्रेन। आमर ब्रेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस विथ दिस जो नॉलेज से गेन करुच्ची आमर एनवायरनमेंट केवल से एक्वेंटेड हो पारुची दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलते आम नोट देखा जीन पियाजेट तांकर हिस्ट्री एवं तांकर से रिलेट आनिबा। देखंतु थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा डिटेल भाव लिखी यही नोटा को आम जो बीएड में प्रिपेयर करें नोटा को आराम से लिखिपारे जो मैंने पूरा आउट ऑफ पूरा फुल मार्क पाइपर। देखो हिस्ट्री जीन पियाजेट वाज ओरिजिनली zoologist, he is a zoologist। he was born in 9 August 1896 in Switzerland। he is known as Swiss psychologist। Jean Piaget tried to find a connection between the process of acquiring knowledge through zoology and biology and
लर्न ऑफ साइकोलॉजी से तीन चैप्टर माने अपनी बायोलॉजी भीतर तो जूलॉजी जाउची ही इज रिलेटेड zoology and साइकोलॉजी को स्टडी करते से स्टडी करी बाहर करते जे आमर पियाजेट जो थ्योरीटा आमर आम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ुचे जीन पियाजेट इज टच होइचे ऑफ द अल्फाबेट बीनेथ से कहाँ से टच थे अल्फाबेट बीनेथ जो आम जेगुड़ा आम करें अल्फाबेट बीनेथ सी होचंती आमर अल्फाबेट बीनेथ जे अछंती सी होचंती किए इंटेलिजेंस फादर कह जाता and work is the test in the French school children Jean Piaget. He is known as father of child psychology. He is known as father of child psychology. Piaget was radically of the constructor of the believed in the independent constructive knowledge of a child himself. पिला निजे खुद ता पाखरे नॉलेज अच्छी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट से खुद ही कर पारुछि ताते कहंती एटा कहंती he believed that children are little scientist कौन little scientist लिखि पारि बडा एग्जाम ले he believed that who believed that the children are little scientist Jean Piaget believed that children are little scientist okay Piaget theory पढ़िया पूर्व आम किसी Piaget theory सब आम सब एगुड़ा टर्म अच्छी एटा मु रिलेटेड करिछि माने एग्जाम रे लिखि पारिबे मु किसी कहूछि वर्ड जो Piaget थ्योरी ना डिवाइड टू पार्ट डिवाइड है कौन कौन टू पार्ट डिवाइड है सी गोटे 4 स्टेज करथिले सेकेंडली 4 स्टेज रे से डिवाइड करथिले और फास्ट कौन करथिले से फास्ट करथिले देख कौन Piaget तो फास्ट करथिले से कहते कंस्ट्रक्टिंग देयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड पिला निजे कंस्ट्रक्ट एटा कोनी कंस्ट्रक्टिव नि अप्रोच कोनी कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ओके construct their knowledge in the world in the own world यही दुईटा पार्ट रे से डिवाइड करथिले चलन देखिबा he used some important his theory that is first assimilations equilibrations and new situation disequilibriums and accommodation okay that is the four different of the term used of the by the Jean Piaget then schema the term the different of concept of cognitive development discussed first of all schema what is schema Piaget used the term schema the program from schemata to refer the mental structure which is believed that the mental structure constructed in the measuring the new experiences जो आम स्कीमा कथा कहले आम गोटे माने साधा कहवा पॉकेट ऑफ नॉलेज देखो आम पॉकेट ऑफ नॉलेज जेटा कि आमर ब्रेन भितर एक्जिस्टिंग है अच्छी ओके दैट मीन पॉकेट ऑफ नॉलेज to organize the environment he believed that the mental structure constructing the meaning the new experiences and facilitating one's cognitive adaptations to the new experience environment जेटा कि आम कहे यदि आम यूज न्यू एक्सपीरियंसेस न्यू मॉडिफिकेशन आम व्यवहार करुचे जोड़ा से आम ब्रेन रे प्रथम कौन हो आम जो स्कीमाटा माइंड रे अच्छी ना से कौन हो आम ता सहित आम रिलेटेड हो adults have the great number of the schema एटा जी कहाँ पाखरे बेसी थाए adults पाखरे बेसी थाए adults have large number of schema okay adults have large number of schema एटा ध्यान से लिखि परि आगे तापर सेकंड पॉइंट जिबा सेकंड स्टार्ट होछि मैं then adaptation what is adaptation it is a biological word yes or no adaptation you may have the studied in the biological term that is process through which the living beings adjust their environment adaptation कौन था कि आमे environment से adjust करता हो adjustment in our environment जेटा कि आम एनवायरनमेंट से एडजस्टमेंट करता से आम एडाप्टेशन कहता एडाप्टेशन जस्ट एज ह्यूमन बींग्स
adopt the environment their thinking also adapt to environment and also the changes their experiences तार आम एक्सपीरियंस चेंजेस करिया हला कार changes their experiences and they changes lead to changes the mental schemes. Adaptation divided in two types, one is assimilation and other is accommodation. आम बहुत किसी कथा लिखि परिबा आम अछि हमर जे कोनोसी बही यूज करले हम जानि परिबा कोन एडाप्टेशन स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन एसिमिलेशन एक्कोमोडेशन ये सब बहुत प्रकार अछि जेहेतु आमे परीक्षा रे हमर 15 मार्क आसु जे कोनोसी एग्जाम दउ जे 15 टू 10 मार्क आसु तो आमे के भଳି भाबरे लिखिले हमको फुल मार्क मिलिबो सेटा देखिबा एवं ए जो रिलेटेड क्वेश्चन अछि ए भितरे ए क्वेश्चन डिटेल्स जो टीचिंग एग्जाम दवा सेटा भाई बहुत यूजफुल हबो. तो व्हाट इज assimilation? It is occurs when children take a new information and incorporate it to their existing schema. जोटा कि आम से गोटे कौन कर जेकोसी गोटे न्यू इनफर्मेशन टाक आम ब्रेन को आम सब देखला गोटे जिनसा देखला गोटे ऑब्जेक्ट देखला देखला परे से जिनसा को से कौन कर आमर ब्रेन रे थिबा एक्जिस्टिंग स्कीमा से इनकॉर्पोरेट कर देखला एटा ठीक अच्छे. देखिए गोटे एग्जांपल देछि ए यंग किड्स मे बी आइडेंटिफाई ऑल self toys as a teddy bear and all flying vehicles as a aeroplanes. से जानि से जो गुड़ा ऊपर उड़नते से सब एरोप्लेन दैट मींस जदि गुड़ा देखला गोटे फ्लाइंग वेहिकल देखला से कहला इट इज एरोप्लेन तो से कोन कला से एरोप्लेन ता ब्रेन भीतर एक्जिस्टिंग कर रखिछि दैट इज नोन एज जेटा एक्जिस्टिंग स्कीमा रहउछि सेटा को आमे जो हमर जे कोनोसी न्यू इनफॉरमेशन आउछि एक्जिस्टिंग स्कीमा से इनकॉर्पोरेट हो जाउछि दैट इज नोन एज एसिमिलेशन. And second point is what is accommodation? Accommodation involves the modification of existing schema. अच्छा एमती गोटे कौन सी कथा ही तो सेटा इनकॉर्पोरेट करि पार नथिबो कहा से आम ब्रेन से इनकॉर्पोरेट करि पार नथिबो सत्य बेले करता मध्य डिसइक्विलिब्रियम आसतो मुझे प्रीवियसली कहिछि डिसइक्विलिब्रियम हैला सत्य बेले से कोन करबा ना सेटा को से ब्रेन भितर मॉडिफाई करिवो तो एटा गोटे नुआ इनफॉरमेशन आम ब्रेन भितर गोटे नुआ स्कीमा आसिक ऐड हला द नुआ इनफॉरमेशन एंड द एक्सपीरियंसेस दैट इज द वर्ड इज मोस्ट व्हाट इज मॉडिफिकेशन एंड दस वर्ड इज न्यू इनफॉरमेशन इज यहाँ पे द चिल्ड्रन टेक ए न्यू इनफॉरमेशन जेटा न्यू इनफॉरमेशन जेटा ऐड होची सेटा होची इनकॉर्पोरेट होची आम ब्रेन सेटा होची एसिमिलेशन जेटा जो इनफॉरमेशन टा आम इन्वॉल्व करूचे ताको मॉडिफाई कर परछे हां एटा होची या नुएता सेटा को जाय हम कहबा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेव एक्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज accommodation. For example, the kids of the identify that is not all flying vehicles are aeroplanes. से आइडेंटिफाई करि पला जे से समस्त उड़ंता vehicle गुडा कोन एरोप्लेन नुहंती. In this case accommodations would be involved. That is सेटा कोन इक्विलिब्रिएशन हे गेला माइंड से गोटे जिंस से गोटे ऑब्जेक्ट से इक्विलिब्रिएशन हे गेला सेटा कहै काम कोन accommodation. Okay, then asla equilibration, that is where is the assimilation and accommodation work together to produce the equilibration. Okay, that's why it is very important when the assimilations and accommodation work together to produce the equilibrium. This process equilibration promotes process on towards and involving the complex thought. Okay, it is known as equilibration. Then discussion about the first stages. अच्छा आम ये स्टेजटा थिला कौन आमर डिफरेंट कॉन्सेप्ट एवं डिफरेंट टर्म जो टर्म एसिमिलेशन एक्कोमोडेशन टर्म. नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा. सो डिफरेंट ऑफ स्टेजेस कौन स्टेजेस दे पियाजेट डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन 4 stages. व्हाट इज द स्टेजेस? तो तुम मैंने सब जानी जो मैंने पढ़ी जानी डिफरेंट स्टेजेस है. तो पियाजेट बिलीव दैट चिल्ड्रंस मूव आवर 4 stages. पियाजेट बिलीव करते थे पिला माने 4 स्टेज देखि कौन गति करती स्टेजेस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एटा सेकंड स्टेज को कौन हम दुटा पार्ट करते गोटे हूँ कौन कंस्ट्रक्टिव वर्ड एंड सेकंड इज 4 stages. एटा सेकंड जहाँ पढ़ुचे 4 stages. फर्स्ट कौन सेंसरी मोटर. सेंसरी मोटर दैट मीन्स सेंसरी मोटर बार्थ 2 years माने सेंसरी मोटर पिलार कौन डेभलप होता है तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट केमिति घटता है सेटा से कौन एक्सपेरिमेंट कर देखी.
experiences the word through which first of all word ଗୋଟେ word ମନେ ରଖିଥିବ ଏଠି ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପିଲାଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଭୁଲିଯାଏ ସେ କଥା ତା ଆଗରୁ ଜିନିଷଟା ନେଇଗଲା ଅବଜେକ୍ଟ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଏଇଟା ନାହିଁ the experiences that or things the experience the word through his sense, that means in this sensory motor sense as teacher, senses are teacher एथिरे मुख्य भूमिका होची सेंस रो था तो जो हमर देयर इज 5 सेंसेस ऑर्गन यू आर प्रेजेंटेड तो से गोटा थांती एठी कोन एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड थ्रू व्हिच सेंसेस एंड एक्शंस हियरिंग टचिंग स्माउथिंग ग्रास्पिंग दैट इज सेंस आर द टीचर मैं लिखा रहा हूं सेंस आर टीचर and cognitive development begins with a baby use of the sense and movements विभिन्न आमर सेंस मूवमेंट द्वारा ही तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट घटी है तो पिलाटा को ताको भोक लगी से ऑटोमेटिक तार पार्टी टणे पड़ी थे और ताको भोक लगी से कांदिबो तार सेंस करण से क्राइम करिवो तार डिफरेंट ऑफ सेंस देखा जिवो एंड चिल्ड्रंस बिगिन टू इमिएशन मेमोरी एंड ऑफ द थॉट ये पिला मानकर यूज करतांती इमिएशंस मेमोरी एंड थॉट को से यूज करतांती एवं यही क्वेश्चन बारंबार आसे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट परमानेंस ऑब्जेक्ट परमानेंस मन रखिबो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस मन रखिबो जेटा ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस टा क्वेश्चन टा आस्ता है हमरो सेटा आस्ता है हमरो कंक्रीट ऑपरेशनल रे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस टा हमरो आस्ता है कोजरे सेंसरी मोटर रे ओके देन सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेजेस जेटा 2 to 7 ईयर को बोइरे 2 to 6 ईयर लगे 2 to 7 ईयर लिखिबो ठीक अछि प्री ऑपरेशनल स्टेजेस प्री ऑपरेशन से कोन learns to use language to present object by image and words that is known as symbolic form जो गोटा पिला गोटा symbolic form द्वारा मतलब को different type of language को develop कराया था okay again another is classify the object by a single feature जो कौन सी गोटे सिंगल फ्यूचर देखि पिलाटा क्लासिफाई करि पारे कोन ऑब्जेक्ट टा कोन and also irreversibility that are most important irreversibility children are not capable of operation that are reversibles and obey the logical value for example 6 plus 2 equal to 8 he cannot say that 6 minus 8 minus 2 equal to 6 he cannot say that he know about the addition but he do not about the subtraction and that irreversibility nature to nasta hela and linguisticism very important children are not able to distinguish between one's own perspective okay one perspective এটা কোন इगोसेंट्रिज्म देन एनालिसिस एनिमिनिज्म यहाँ से मैं लिखा नहीं रहा हूँ एक वर्ड याद करना है एनिमिनिज्म एनिमिज्म এটা कौन बोला एनिमिनिज्म चिल्ड्रंस थिंक एवरी इमोर्टल्स हैव ए लाइफ जेकोसी जिनस तार गोटे गोटे जीवंत अच्छी लाइफ अच्छी एवरी नॉन लिविंग एग्जाम नॉट लिविंग ऑब्जेक्ट हैव्स ए लाइफ एनिमिनिज्म ओके देन आसला लैक ऑफ सेंट्रेशन व्हाट इज सेंट्रेशन फोकसिंग अटेंशन ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एक्सक्लूजन्स ऑफ ऑल अदर्स इट इज ऑपोजिट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन जदि आम सेंट्रेशन फोकसिंग अटेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट से फोकस करथबो ना से टिके ऑपोजिट हो गला ताको हमें डिसेंट्रेशन लिखा हूँ ऑपोजिट हो जाएगा तो कुछ होता है डिसेंट्रेशन लिखा हूँ देखिए सेंट्रेशन तो किसी देखिए डिसेंट्रेशन देन लैक ऑफ कंजर्वेशन व्हाट इज लैक ऑफ कंजर्वेशन चिल्ड्रंस डू नॉट अंडरस्टैंड दैट सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट सच एज वॉल्यूम मास नंबर and remains unchanged when object appearance are attained in some superficial way okay the lack of conservation children are do not understand about the different of the certain property of the object तार वॉल्यूम अच्छी तार मास अच्छी डिफरेंट नंबर ऑफ द तार डायमेंशन अच्छी से विषय से कंजर्वेशन लैक ऑफ कंजर्वेशन था देन कंक्रीट ऑपरेशनल द थर्ड स्टेज इज कंक्रीट ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल विषय में थर्ड स्टेज जेटा को एज 7 ରୁ 11 इयर्स 7 ରୁ 11 इयर्स लॉजिक बिगिन्स अबाउट द कंक्रीट ऑब्जेक्ट कौन कहली
तार लॉजिकल डेवलपमेंट करते कंक्रीट ऑपरेशनल चिल्ड्रंस थिंकिंग लॉजिकली पिलाମାନଙ୍କର लॉजिकली थिंकिंग आस्था है लॉजिकली थिंकिंग कौन कंक्रीट ऑपरेशनल एंड कंजर्वेशन दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंजर्वेशन एथिरे भी कंजर्वेशन होता है conservation that is children can understand an object or substances appearances does not changes their basic property जैसे chemical reaction पढ़ते हैं जो भी chemical reaction अच्छी जो तार conservation जो conservation मतलब पिलारो children can understand that object substance appearances does not changes in basic property okay then असला एथिरे डिसेंट्रेशन आस्ता है सेठी हम यहाँ पूर्व थिला कौन सेंट्रेशन आस्ता है एथिरे डिसेंट्रेशन व्हाट इज डिसेंट चिल्ड्रन डेवलप्ड द एबिलिटी टू कंसीडर मल्टीपल एस्पेक्ट सेठी कौन गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर से फोकसिंग करथला एठी मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऊपर से फोकसिंग कर परिबो दैट इज डिसेंट्रेशन ओके एंड आल्सो ट्रांजिटिविटी व्हाट इज ट्रांजिटिव डेवलपमेंट पिलार रिवर्सिबल डेवलप होता है ना 6 + 2 = 8 8 + -2 = 6 से कहि परथबो एवं डिफरेंट ऑफ द ट्रांजिटिविटी जे भले ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी से कहि परते ए ग्रेटर देन सी से कहि परिबो हला ए बी टार बड़ा बी सी टार बड़ा ए सी टार बड़ा हबो दिस इज ट्रांजिटिव मेथड जो माने मैथमेटिक्स रे ट्रांजिटिविटी पढ़ते फंक्शनल ट्रांजिटिविटी देन असला सीरिएशन व्हाट इज सीरिएशन seriation children develop the ability mentally arranged items along the quantitative dimension such as height length weight पिलर गोटे जो आम गोटे बाहर करेंगे आयतकार क्षेत्रफल तो से जानी दरकार तार लेंथ कौन हाइट कौन एंड वेट कौन से विषय से जानी दरकार सीरिएशन चिल्ड्रन डेवलप्स द एबिलिटी टू मेंटली अरेंजिंग आइटम्स along the quantitables okay then last stages that is formal operational stages जो 11th and above okay 12 से above 11 से above को लिखा है देखिए in these stages the abstract concept are first क्या abstract concept पिलार abstract thinking एथरा आसीबो कोथरे formal operational that is develop the abstract thinking and also children thinks more like scientist ସେମାନେ କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ पर ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି and also adolescence is egocentrism एक adolescence egocentrism age of the thinking to develop the egocentrism okay and also adolescent can with the hypothetical problems with many possible solution hypothetical problem से many possible solutions ସେମାନେ ବାହାର କରି ପାରିବେ ଏବଂ as are creative thinkings and divergent thinkings या थिला तो पिलार यही एजटा हूँ क्रिएट कर कौन डिफरेंट ऑफ थिंकिंग ऑफ द क्रिएटिव थिंकिंग आसो डाइवर्स थिंकिंग आसो ये सब फॉर्मल ऑपरेशन होता है इट इज नोन एज स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम स्टेजेस इन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स मनीष भर कौन झड़ बात्यार समयटा आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस ओके तो यह थिला हूँ आमर डिफरेंट ऑफ द 4 स्टेजेस एंड डिफरेंट ऑफ द डिफरेंट ऑफ टर्म ओवर भी देखा गले आम जो टर्म थिला क्लास एसिमिलेशन एकोमोडेशंस इक्विलिब्रेशंस एंड ऑल्सो डिफरेंट 4 स्टेजेस प्री ऑपरेशनल्स कंक्रीट ऑपरेशनल्स फॉर्मल ऑपरेशनल्स थिला सेगुड़ा आम डिस्कशन करिलु देन सम हिंट्स एगुड़ा एटा लेखिले लिखि परिबो किंतु जानिया दरकार गोटे कौन बिहेवियरिज्म कौन कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कौन अच्छी ह्यूमानिज्म ये तीन डिफरेंस लिखी बिहेवियरिज्म कौन बोले बिहेवियरिज्म हूँ बिहेवियरल एप्रोच अच्छी बिहेवियरिस्ट एप्रोच लेट्स स्ट्रेस ऑन द रूल ऑफ एनवायरनमेंट जेटा को आमर एनवायरनमेंट रूल करता है जो बिहेवियरटा दैट इज स्टिमुली एंड डिटरमाइनिंग द वे वी एक्ट ऑफ लर्निंग चेंजेस इन बिहेवियर आमर जो कौन से लर्निंग चेंज हो विथ आवर बिहेवियर बिकॉज द एक्सपीरियंसेस एक्सक्लूडिंग द चेंजेस ऑफ द फैटिग जोटा एगुड़ा आम एक्सपीरियंसेस चेंज होता है एक्सक्लूडिंग कौन चेंजेस ऑफ ड्यू टू द फैटिग्स इंजुरी ड्रग्स इफेक्ट ये सब कौन सेंटर ऑफ द अप्रोचेस ये सब कौन होता है बिहेवियरिज्म सेकेंड आसा कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिव विषय तुम मैंने जो मैंने बीएड कर जो मैंने टीचिंग एग्जाम अच्छे कंस्ट्रक्टिविटी वर्ड्स पूरा इंटर रिलेटेड
जेहेतु आम जो टीचिंग जो दूसरे पिला कंस्ट्रक्टिव 5E मॉडल दूचे है 5E मॉडल जो एनगेजमेंट एक्सप्लोरेशन एक्सप्लेनेशन इलाबोरेशन इभालुएसन जो 5E मॉडल अच्छी से कौन जो थे कि पिला माने ही एक्टिव रोल रहे एवं टीचर पैसिव रोल रहे कंस्ट्रक्टिव पिलार निजर खुद हिमसेल्फ ही इज ओनली डेवलप देयर इज नॉलेज इट इज सेंटर्ड ऑन द आइडिया दैट इज ह्यूमन नॉलेज एंड लर्निंग्स आर एक्टिव जो थे कि जो कंस्ट्रक्टिव पढ़ुचे ह्यूमन नॉलेज एवं द लर्निंग एक्टिव रहे ओके दैट इज द कंस्ट्रक्टिविटी इन टीचर इट इज द क्रिएटेड और कंस्ट्रक्टेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल पिलार के भाया खुद कंस्ट्रक्शन डेवलप हम से विषय देखता एंड लास्ट ह्यूमानिज्म फिलोसफी वर्ड इट इज ए फिलोसफी फोकस्ड ऑन द ह्यूमन मोड्स ऑफ द रियलिटी कोटा रियलिटी अच्छी से देखते कौन दैट इज द रिलीजियंस एंड सुपर नेचुरल्स पावर इट इज ह्यूमानिज्म ओभार भी देखा गले कौन पियाजेट थ्योरी एमती लिखे एग्जाम लिखिपर एमती पियाजेट थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस एंड कॉग्निटिव प्रोसेस स्टेजेस कौन द सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल स्टेजेस कॉग्निटिव ऑपरेशनल स्टेजेस एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस ओके एंड कॉग्निटिव प्रोसेस कौन रहा स्कीमा एसिमिलेशन एकोमोडेशन इक्वेशन ये तुम लिखिपर है नेक्स्ट आम सम क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँ पढ़ले तार समस्त क्वेश्चन डिस्कसन करदे फर्स्ट क्वेश्चन according to Piaget during first stages development birth to 2 years a child are best कोठी using sense कही sense a teacher second होची the stage of cognitive development according to the Piaget in which a child display object permanence most important object permanence how to कोई भूली गली object performance से कौन थे कंक्रीट ऑपरेशनल मन रख ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कौन थे सेंसरी मोटर रही है कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ साइड कहते नहीं कि आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड समस्त होते आखिर गले मन रखते आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस मेंटल डेवलप द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पिलार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है ऑल द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द पियाजेट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस एक्सेप्ट लैक ऑफ कंजर्वेशन रिवर्सिबिलिटी होता है इंडक्टिव रीजनिंग होता है स्पैटियल थिंकिंग होता है केवल लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है एंड क्वेश्चन इज Piaget proposed that pre-operational children are unable to conserve. He attributes the inability to which one the following factor. यहाँ कौन फैक्टरटा फॉलोइंग कहता है कहले बेले कौन हम डावर रिवर्सिबिलिटी थॉट इरिवर्सिबिलिटी थॉट देन डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटा कहली साइंटिफिक थिंकिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे होता है ओके देन सेकंड दिस क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर यहाँ मध्य कौटा मैच पेयर देखा कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासीफाई ठीक अच्छे ये मैच हो सेकेंड देख आउ कि फॉर्मल ऑपरेशन चाइल्ड इमिएशन एटा तो आम सेंसरी मोटर इमिएशन बिगिन इमेजिनरी प्ले एटा तो हम इनफान्सी एटा हम ना एटा भूल इनफान्सी एप्लाइज लॉजिक एंड एबल टू इनफर एटा भी तो नुहे प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डिडक्टिव थिंकिंग प्री ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशन होता है फॉर्मल ऑपरेशन होता है कौन डिडक्टिव थिंकिंग एटा भी हम तो ओनली फास्ट हम कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व द क्लासीफाई एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन परीक्षा आसी देखा अच्छी चाइल्ड से क्लथेस ड्राई फास्टर इन सन सी इज फॉलोइंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेस सिंबॉलिक थॉट केबे भी नुहे इगोसेंट्रिक थिंकिंग ना तो केमिति इगोसेंट्रिक थिंकिंग से कहते क्लथेस ड्राई फास्टर इन सन सूर्यर किरण में क्लथेसटा शीघ्र सुखी जाऊँगी अर्थात गोटे कज अच्छी साइंटिफिक कज रोचे देन कज एंड इफेक्ट राइट आंसर देन कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज डेस ये दुईटा रही जाए बोधे तार ऑप्शन अच्छा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग एटा तो केबे नुहे एबिलिटी
फॉर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एटा कौन एबिलिटी टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आउ दुटा ऑप्शन लिखि देछि मु एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इटा ही परिबो कि ना इटा भी हबनी लास्ट वन इज एबिलिटी टू अदर पर्सपेक्टिव इटा राइट आंसर एबिलिटी टू टेक other perspective दिस इज जो आंदा एटा थिला हमर कोन एटा आंसर राइट आंसर एटा थिला हमर पियाजेट थ्योरी रो संपूर्ण नोट्स विथ तार डिफरेंट एक्सप्लेनेशन अच्छा तुम मान को क्वेश्चन रहिला तुम माने कमेंट सेक्शन में मते जणाइबो क्वेश्चन होची while riding a bicycle boy promotes his sister drive fast we will reach there earlier he is showing an understanding of days first option symbolic thought second option egocentrism third is cause and effect and fourth one is reversibility thinking reversible thinking ए क्वेश्चन टाको तुम माने कमेंट सेक्शन में जणाइबे आउट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेजेस फर्स्ट ऑप्शन इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर सेकंड इज डिफर ऑफ द इमिएशन थर्ड इज इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द थॉट एंड सर्कुलर रिएक्शन जो दुईटा क्वेश्चन अच्छी ये दुईटा क्वेश्चन आपण मैंने कमेंट सेक्शन में यार आंसर देखिपारे जदि वीडियोटी भल लगी ताने आपण लाइक शेयर कमेंट करेंगे थैंक यू एवरीवन।